Jai Jagannath, all of you. Welcome to our YouTube channel, Utkal classes. आमे जो चैप्टर पढ़ुले आज तार सेकेंड लेक्चर रहिबो। सो आमे आज क्लास 8 रो बायोलॉजी जोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो रो सेकेंड लेक्चर सेकेंड सेशन आमे पढ़िबा। लास्ट क्लास रे आमे कोन पढ़ितिले ताको रिवाइज करवा, देन हमें न्यू क्लास स्टार्ट करवा, न्यू सेशन स्टार्ट करवा। ता पूर्व समस्त को रिक्वेस्ट जे समस्ते जो माने वीडियो को देखुछंती समस्त चैनल को सब्सक्राइब करवा एवं सेशन को लाइक करवा। ओके, क्लास को लाइक करवा। यदि क्लास भल लागुची डेफिनेटली कमेंट रे फीडबैक दबा। जहाँ भी डाउट होची तुम माने कमेंट रे पचारि पार। देन केता इनफॉरमेशन दबार अछि। व्हाट्सएप ग्रुप तुम मानक पई जारी हिच जोते कि हम हम डाउट हम तम डाउट को हम पाखे पहुंचे परबो ये व्हाट्सएप नंबर थ्रू रे। ओके, और टेलीग्राम रो लिंक मध्य डिस्क्रिप्शन में दिया जाई छी, जहां को क्लिक करिकि तुम माने पीपीटी पाइबा पई, नोट पाइबा पई, जहाँ भी क्लास रो नोट्स रहला ताको पाइबा पई टेलीग्राम चैनल ओके जॉइन करि परिबो। से तुमको नोट्स मिल जिवो। तो समस्त को रिक्वेस्ट रहइबो कि समस्त टेलीग्राम चैनल जॉइन करन। ओके, जोटा कि समस्त पई हेल्पफुल रहइबो। से माने नोट्स पाई परिबा फ्री ऑफ कॉस्ट। देन जदि कहिबा हमर उत्कल क्लासेस रो ऐप मध्य रही जोटा कि कंप्लीटली एड फ्री। सो यूट्यूब रे पाठ पढ़ला बेले जदि डिस्टर्बेंसेस होची तो हमें उत्कल क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके सेथरे पढ़ी परिबा। ओके, सो जो तुम मानको विदाउट एड रे क्लास गुडा को विथ नोट्स मिल जिवो। सो आउ देरी न करी हमें सेशन स्टार्ट करवा। लास्ट क्लास रे हमें कौन डिस्कशन करथिले मु शॉर्टली कहि दोची। हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म विषय जानथिले। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन, ओके, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रो कैटेगरी देखिथिले, तार एग्जांपल देखिथिले, तार स्ट्रक्चर देखिथिले, वायरस विषय जानथिले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोठी रुहंती से विषय मध्ये डिस्कस करथिले। माइक्रो ऑर्गेनिज्म करो केमती फ्रेंड्स माने हमरो सेटा आलोचना करथिले। आ पढ़िथिले जे माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने हम पई फ्रेंड हे पारंती आ फो मध्ये हे पारंती, जोटा कि हम मानक पई हार्मफुल मध्ये हे पारंती। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिस्क्राइब करथिले लास्ट सेशन में कंप्लीटली। आज द सेशन में हमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो डिस्कस करबा। आज द क्लास रे हमें कंप्लीटली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान विषय रे जानिबा। ता संगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल ए विषय रे मध्ये आलोचना हो। जदि कहबा हम कोन पढ़िथिले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म रे, हमें को माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुडा को हमर फ्रेंड भाव रे काम करंती, कोन हमको हेल्प करंती से गुडा को हम पढ़िथिले। जेमति मेकिंग ऑफ कॉर्ड रे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म केमिति हेल्प करछंती, मेकिंग ऑफ ब्रेड रे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म केमिति हेल्प करछंती। सो कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान को केमिति हम बिजनेस रे यूज करि परछे, कमर्शियल यूज करि परछे। से माने केमिति मेडिसिन तैयार करिवारे हमको हेल्प करछंती एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रा में एंटीबायोटिक्स तैयार करि परछे से विषय आलोचना करथिले। देन वैक्सीन कोन पढ़िथिले, वैक्सीन रे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो प्रेजेंस पढ़िथिले, वैक्सीन केमिति काम करे पढ़िथिले। ओके, तापरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म केमिति फार्मर रो फ्रेंड, केमिति से माने सॉइल रो फर्टिलिटी इंक्रीज करंती से विषय रे मध्ये
आम क्लास रे आलोचना करथिले। सो लास्ट पढ़ी क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, केमिति माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने एनवायरनमेंट को क्लीन रखुछंती ता विषय मध्ये आम आलोचना करि सारिथिले। सो आज क्लास रे आमे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो हार्मफुल साइड ता देखिबा। तांकर फ्रेंडली साइड ता देखिथिले केमिति से माने आम पई फ्रेंड और केमिति से माने हार्मफुल आज क्लास रे आम आलोचना करिबा। सो जदि कहबा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज, विभिन्न वे रे से माने आम पई हार्मफुल हे पारन। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, केते माइक्रो ऑर्गेनिजम अछंती जो माने मनुष्य शरीर रो डिजीज रो कारण होई थांती, प्लांट्स रो डिजीज रो कारण होई थांती, एनिमल्स रो डिजीज रो कारण होई थांती। such disease causing microorganisms are called pathogens। तो से भलिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पाई हमको डिजीज होता है आमे ताकू आमे से भलिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेन बोली कहता। कौन कहता? पैथोजेन बोली कहता। some microorganisms spoil food, clothing and leather। किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एमिति अछन जो माने हम फूड को नष्ट करती, क्लॉथिंग को, लेदर को नष्ट करथांती। ओके, सो एठी हमें समस्त क्लियर होबा जे पैथोजेन कौन। ओके, जो ऑर्गेनिज्म मानन को द्वारा ह्यूमन को, एनिमल को, प्लांट को डिजीज होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉजिंग से मान को हम पैथोजेन्स बोली कहता। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड पैथोजेन्स। क्लियर समझते? सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें पढ़िबा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ओके, मनुष्य शरीर रे डिजीज सृष्टि करथवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ओके, से विषय हम पढ़िबा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। मनुष्य शरीर रे डिजीज तैयारी करथवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रोबायल disease that can spread from an infected person to healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। माने एठी गोटे टर्म आसुची communicable disease। ताले communicable disease हम काहा कहबा? जो डिजीज गोटे इन्फेक्टेड पर्सन, गोटे रोगी ठारू गोटे हेल्दी पर्सन को एयर थ्रू रे किंबा वाटर थ्रू रे किंबा फूड थ्रू रे किंबा डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट रे, ओके, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट रे स्प्रेड होता है गोटे रोगी ठारू गोटे हेल्दी पर्सन को। गोटे इन्फेक्टेड पर्सन रु गोटे हेल्दी पर्सन को जो डिजीजटा एयर, वाटर आउ फूड बा फिजिकल कांटेक्ट रे स्प्रेड होता है, सेटा को हमें कम्युनिकेबल डिजीज बोली कहि थाउ। जदि से भलिया डिजीज रो एग्जांपल हमें देखिबा सेटा होची कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। ओके, जदि कहबा कॉलेरा होची तार गोटे एग्जांपल, ओके, कॉमन कोल्ड तार गोटे एग्जांपल, चिकन पॉक्स तार गोटे एग्जांपल, ट्यूबरकुलोसिस तार गोटे एग्जांपल। ओके, सो एठी आ गोटे प्रश्न आसुबा हम मन रे जे एआर द्वारा हां हमें बुझी पाले फिजिकल कांटेक्ट माने डायरेक्ट टच, हमें जदि जनक को स्पर्श करूचे बा जनक संगे मिलामिशा करूचे, सांग साथी होउचे, से जगह रे कोन होउची ना हमर फिजिकल कांटेक्ट हे कि डिजीज दा स्प्रेड करछ। किंतु एआर थ्रू रे, वाटर थ्रू रे, फूड थ्रू रे केमती स्प्रेड करछ? जदि कहबा जेमती हमें समस्त थंडार एग्जांपल नै परिबा जे काश, छिंक ये सब द्वारा कौन हुए ना एयर थ्रू रे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने इन्फेक्टेड पर्सन रु हेल्दी पर्सन को जानती, जनरल लैंग्वेज रे कहूची। देन वाटर कथा जदि कहबा सेमती जदि वाटर रे मध्य स्प्रेड होबार चांसेस रही। जदि गोटे इन्फेक्टेड पर्सन गोटे पानी को पीछे आमे से वाटर को कंज्यूम करछे बा ताको पीउछे ताले ता द्वारा इन्फेक्टेड होबार अछि। जदि आमे फूड कथा कहबा, जदि रोगी जो फूड खाउची आमे जदि रोगी संगे बसी खाउछे ता द्वारा मध्य
स्प्रेड होची ओके सो एमती विभिन्न प्रकार मीडियम्स देगी कौन हुए ना जोड़ा कम्युनिकेबल डिजीज से इन्फेक्टेड पर्सन रु हेल्दी पर्सन रो बॉडी को स्प्रेड होता है ओके सो एग्जांपल ऑफ सच डिजीज आम देखले से भलिया डिजीज रे एग्जांपल आम देखले कोलेरा हला कॉमन कोल्ड हला चिकन पॉक्स हला ट्यूबरकुलोसिस हेला क्लियर समझते सो जदि क्वेश्चन आसे गिव सम एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज रो एग्जांपल दियो सो आम कहि परबा कोलेरा कॉमन कोल्ड चिकन पॉक्स ट्यूबरकुलोसिस सो ए सब होउछंती कम्युनिकेबल डिजीज रो एग्जांपल देन एठी आ गुटे टर्म जानिबार आवश्यकता अछि जोटा होछि कैरियर पिला माने कैरी रु हेछि कैरियर सर कैरी कोन कैरियर कोन कैरी मींस धरिबा कैरियर मींस कोन कैरी बैग हमें कहू कैरी बैग माने कोन जिंस को होल्ड करिवार बैग सो एठी हमें जति बुझिबा जे कैरियर कहले जो मानक द्वारा गोटे डिजीज कैरी होइथाए सेटा को हमें कैरियर कहूचे ए कैरियर इज ए पर्सन और ऑर्गेनिज्म से गोटे पर्सन हे पारे बा से गोटे ऑर्गेनिज्म हे पारे इन्फेक्टेड विथ इन्फेक्शियस डिजीज एजेंट बट डिस्प्लेस नो सिम्पटम्स ऑफ इट ओके कैरियर हम कहा को कहूचे जहा द्वारा रोग ट्रांसफर होता है रोग स्प्रेड होता है हम ताको कैरियर कहू से कौन हेतिबो ना इन्फेक्टेड पर्सन हेतिबो विदाउट जीरो सिम्पटम्स किंतु तार किछि सिम्पटम नथिबो ओके सो दे कैन स्प्रेड इन्फेक्शन सिंस दे ऑलरेडी हैव द पैथोजन इन देयर बॉडी सेमानक बॉडी रे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थांती किंतु सिम्पटम्स देखा जाय न थाय सो सेमाने हार्मफुल हे थांती हेल्दी पर्सन पई काहे कि सेमानक बॉडी रो सेई पैथोजन कन्वर्ट हे थाय कोठी के तुम मानकर हेल्दी पर्सन रो body so they are carrier of disease that's why they carries diseases that's why they are carrier of diseases they carries pathogens that's why they are carrier of a pathogen or diseases clear समझते so housefly is one such carrier जदि कहबा housefly रो एग्जांपल हम देखिबा housefly होची से भलिया गोटे कैरियर से भलिया गोटे डिजीज कॉजिंग एजेंट ओके द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज फ्लाई हाउस फ्लाई कौन करे ना गार्बेज रे बसे किंबा एनिमल रो एक्सक्रेटा रे बसे जोड़ा स्टूल हे गला तादरे बसे पैथोजेन स्टिक टू देयर बॉडीज ओके से जो एनिमल रो एक्सक्रेटा हला बस गार्बेज रे जो पैथोजेंस माने थांती जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने थांती डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने थांती से माने कोन होंती ना से फ्लाइज रो बॉडीज रे लागि जानती व्हेन दीज फ्लाइज सीट ऑन अनकवर्ड फूड जेता बेले से हाउस फ्लाइज माने घोड़ा होई नथिबा फूड रे बसंती ता द्वारा कोन होइथाय ट्रांसफर से माने तांको बॉडी रे लागिथबा पैथोजेन ता फूड को कन्वर्ट होबार चांसेस अछि whoever eats the contaminated food so से फूड टा कोन हिजबो कंटामिनेटेड हिजबो से फूड पैथोजेन पळे आसीबो पैथोजेन कोठो आसीला ना जेता बळे हाउस फ्लाई जाई कि कोन करूची ना तमरो एक्सक्रेटा ऊपर बसुची बा गार्बेज ऊपर बसुची ता बॉडी रे माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने लागि जाउछंती से एक्सक्रेटा रु से गार्बेज रु तो ता बॉडी रे लागि थिवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बा पैथोजेन कोन होची से जेता बळे फूड रे बसुची अनकवर्ड फूड रे जोटा घोड़ा होई नथिबा खाद्य रे से जेतबे बसुची सेतबे कोन होची ना ता बॉडी रे लागि थिबा पैथोजेन सेटा फूड रे लागि जाउची जोटा कि कंटामिनेटेड फूड हे जाउची कंटामिनेटेड फूड मींस जो फूड रे पैथोजेंस माने अछंती जो फूडटा नष्ट होई गला पैथोजेन रो मिश्रण रे से फूड को जेतबे हमें इनटेक करू कंज्यूम करू सेतबे हमें रोगी हे थाउ बा रोगाग्रस्त हे थाउ so it is advisable so समस्त को तुम मानु को एडवाइस जे खाद्य जिंस को हमें कवर करके रखिबा एटा तमे माने आज सिखिलो एटा को तुम चतुर्पार्श्व रे मध्य स्प्रेड करिवो जे खाद्य को हमें कवर करके रखिबा केते आवश्यक so avoid consuming uncovered items of a food
जो फूड को अनकवर्ड करा है कि रखा होची ताको अवॉइड करिवार आवश्यकता अछि। सो अनदर एग्जांपल ऑफ अ कैरियर जदि कहबा हाउस फ्लाई परी आउ गोटे एग्जांपल आम पाखरे अछि दैट इज एनाफोलिस एनोफोलिस मस्किटो। So female Anopheles female Anopheles mosquito which carries the parasite of a malaria जे कौन करे malaria रो parasite को parasite of a malaria जोटा को हम plasmodium कहूचे से ताको कैरी करे। सो सेही भली female Aedes mosquito acts as a carrier of a dengue virus। सेमती जेमती female Anopheles mosquito कथा कहले जे कि प्लाज्मोडियम को कैरी करे बा पैरासाइट ऑफ मलेरिया को कैरी करे ठीक से बड़ी एडिस मस्किटो मध्ये कोन करे इट एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस से डेंगू वायरस को कैरी करी थाए। क्लियर समझते। नेक्स्ट देखिबा जदि कहबा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोन देखिबा न हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुरा को हार्मफुल। सो ये आम पाखे रही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन डिजीज बैक्टीरिया द्वारा ट्यूबरकुलोसिस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स स्प्रेड केमती हुए एयर रे ठीक सेमती मिजेल्स अच्छी जोटा कि भाइरस द्वारा हुए तार मीडियम एयर चिकन पॉक्स अच्छी जोटा कि भाइरस द्वारा को माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा हुए ना भाइरस। सो एटा एयर रे ही पारे फिजिकल कांटेक्ट रे ही पारे। पोलियो कथा कहबा एटा भाइरस द्वारा हुए एयर आ वाटर तार मीडियम ही थांती। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन कोन सेठी प्रिकॉशन नबार आवश्यकता थी कोन प्रिवेंशन आमे नबा कोन प्रिवेंटिव आमे नबा ना जदि कहबा से पेशेंट को आइसोलेशन रे रखिबा। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स तांकर पर्सनल एक्टिविटी को अदर मानक ठारो अलगा रखिबा। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुइटेबल एज तांको सुइटेबल समय वैक्सीनेशन दबार आवश्यकता अछि। ठीक से परी जदि कहबा कोलेरा और टाइफाइड जोड़ा कि ह्यूमन डिजीज जोटा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कथा कहले से माने बैक्टीरिया द्वारा स्प्रेड होई थांती। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जदि कहबा से माने वाटर फूड द्वारा स्प्रेड होई थांती। जदि प्रिवेंशन कथा कहबा मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। ओके सैनिटरी हैबिट्स को परिष्कार हाथ धोइबा ओके खाइबा पूर्व खाई सारिबा परे कुली करिबा। सो मेंटेन पर्सनल हाइजीन माने भलो पानी पीबा ओके कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड को खाइबा एंड बॉयल ड्रिंकिंग वाटर गरम पानी पीबा एंड वैक्सीनेशन। से परी हेपाटाइटिस ए रही जोटा कि भाइरस द्वारा स्प्रेड हुए मीडियम जदि कहबा वाटर द्वारा ड्रिंक बॉयल ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन हेपाटाइटिस पाई हमें कौन करबा बॉइल्ड वाटर पीबा एवं वैक्सीनेशन नबा। जदि मलेरिया कथा कहबा सो एटा प्रोटोजोआ द्वारा होई थाए। इट इज ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ इज आल्सो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो मस्किटो द्वारा माने माने ट्रांसफर होई थांती। यूज मस्किटो नेट मशारी लगेबार आवश्यकता अछि। स्प्रे इनसिक्यूरी सॉरी एटा देखा जाउनी देखो ओके सो एटा इंसेक्टिसाइड्स लिखा है। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्किटो मानकर ब्रीडिंग को कंट्रोल करबा जेमते हम चतुर्पार्श्व को सफा रखिबा जेमते कोठो वाटर जमी न रहो। ओके हम चतुर्पार्श्व घर चतुर्पार्श्व रे किंतु वाटर जमा न रहो सेति प्रति विशेष ध्यान देबा काहे पानी जमा होई रहिले ओलिया असना रहिले संतोषंतिया जगह रहिले सेठी ब्रीडिंग ऑफ मस्किटो इंक्रीज होता है। क्लियर समझते। ओके देन हम देखिबा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। हमें एबे देखुथिले ह्यूमन रे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विषय हम पढुथिले। ओके
आउ को डिजीज हुए ह्यूमन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ता मध्य डिटेल आलोचना कले। ओके पूरा कॉन्सेप्ट वाइज हम पढ़िबा। तो समस्ते जदि वीडियो सेशन क्लास समस्त को भलो लागुची जदि भलो लागुची डेफिनेटली निजे पढ़िबा संगे संगे हमें सांग मानक संगे शेयर करिबा चैनल को सब्सक्राइब करिबा। ओके सो एबे हम देखिबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मानक द्वारा डिजीज हुए एनिमल। ओके several microorganisms not only cause disease in humans and plants केवल ह्यूमन और प्लांट रे ही माइक्रोऑर्गेनिज्म मान डिजीज कॉज करंतिनी ସେମାନେ ଆନିମଲ ରେ ମଧ୍ୟ ବଟ୍ ଅଲସୋ ଅଦର ଆନିମଲ ସେମାନେ ଆନିମଲ୍ସ କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଥା କହିବା ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ଇଜ ଏ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଲ ଡିଜିଜ ମଣିଷକୁ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ହୁଏ ଆଉ କ୍ୟାଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ହୁଏ। ସୋ ବାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ अ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस जदि कहबा कैटल को मध्य फुट और माउथ डिजीज जो रही सेटा वायरस द्वारा होता है। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ डिजीजेस। ओके एगुडा कहूची किछि डिजीज रे एग्जांपल जोटा कि एनिमल्स मान को होता है एज वेल एज ह्यूमन बीइंग्स को मध्य होता है थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तुमरो वायरस हे गला तुमरो बैक्टीरियम हे गला। सो जदि आम बैक्टीरियम कथा कहबा ए बैक्टीरियम को किए डिस्कवर करछन्ती रॉबर्ट कोच 1876 रे डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम माने एठी हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम किए बैक्टीरियम को डिस्कवर्ड करिथिले। ओके हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियम सो जदि कहबा रॉबर्ट कोच कौन तांको ना बिले समस्ते मन रखिबा रॉबर्ट कोच जे कि बैक्टीरियम को इन्वेंट करथिले डिस्कवर करथिले व्हिच कॉज एंथ्रैक्स डिजीज जे कि एंथ्रैक्स डिजीज करे। सो एंथ्रैक्स डिजीज रो कॉज बैक्टीरियम एटा को 1876 मसिया रे रॉबर्ट कोच डिस्कवर करथिले। हमें समस्ते मन रखिबा तांको पिक्चर मध्ये हमें एठी देखु। देन हमें प्लांट ह्यूमन रे देखिले एनिमल्स रे देखिले हमें प्लांट रे देखिबा। ओके सो प्लांट रे केमती एटा ह्यूमन करो रोल प्ले करछ केमती प्लांट रे मध्य ये डिजीज कॉज करछ। So disease causing microorganism in plant को organism माने disease करंती plant रे disease causing organisms of a plant हमें पढ़िबा। ओके आ हमें देखिबा को organisms द्वारा केउ disease होउची plants माननको। So it is also a interesting topic। ओके एमती बहुत नुआ नुआ जिनस रही बायोलोजी रे बायोलोजी गोटे इंटरेस्टिंग जिनस आम ह्यूमन बॉडी कथा आम जान पारू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कथा जान पारू एनिमल्स कथा प्लांट कथा। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो लेट्स डिस्कस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। प्लांट्स रे को माइक्रो ऑर्गेनिजम थांती जो माने डिजीज करंती। So several microorganisms cause disease in plants। बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म थांती जो माने कि प्लांट्स रे डिजीज को सृष्टि करंती। को प्लांट रे व्हीट हे गला राइस हे गला पोटैटो हे गला सुगर केन हे गला ऑरेंज हे गला एप्पल हे गला एंड मेनी मोर्स। सो ए सब प्लांट्स मानन को डिजीज रहता है। ओके The disease reduce the yield of a crops जदि कहबा डिजीज हेले कोन हुए ना क्रॉप शस्य उत्पादन रो परिमाण कमी जाए। सी द टेबल फॉर सम सच प्लांट डिजीज हम ए टेबल रे देखिबा बे एवं जानिबा किछि प्लांट डिजीज विषय रे
they can be controlled by the use of a certain chemical which kill the microbes जहाँ को आमे कंट्रोल करि परिबा किछि माइक्रोब्स को किल करिकि by using certain chemicals किछि केमिकल को आमे यूज करिकि माइक्रोब्स मानन को कंट्रोल करि परिबा माइक्रोब्स मान को इंक्रीज को आमे कंट्रोल करि परिबा आमे हम क्रॉप फील्ड को सेव करि परिबा तो समस्त ए जिंसटा जानिबार आवश्यकता अछि तो पिला माने प्लांट डिजीज कथा कहबा सिट्रस कैंकर कौन पिले सिट्रस कैंकर सो एटा को माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा हुए ना बैक्टीरिया मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर जदि कहबा रस्ट ऑफ वेट वेट रस्ट कथा कहबा सेटा फंगाई द्वारा हुए आरो जदि मीडियम कहबा एयर और सीड्स येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी ओके येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी जदि कहबा एटा वायरस द्वारा होता है and the mode of transmission is insect okay so disease causing microorganism in plants ये सब microorganism द्वारा plant को ये सब disease हेता है okay then आमे जदि कहबा एठी को harmful जेतक थिले तुमरा harmful microorganism जहां हमर जानिबार थिला ओके हमें पूरा डिटेल डिस्कस कले किछि भी हमें कांसेप्ट छाड़ी ने ओके सो किछि भी टॉपिक हमर रही जाइनी जोटा कि हमको एनसीईआरटी रे अछि किंतु हम क्लास रे डिस्कस है सो ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड बाय अस सबू जाक टॉपिक हमर कवर हेछि समस्ते लेक्चर को वेरी वेरी इंपोर्टेंटली रिसीव करवा क्लास को नबा नोट्स प्रिपेयर करवा नोट्स कलेक्ट करवा ओके सो जमा भी हेला करबो ना फूड पॉइजनिंग एंड प्रिजर्वेशन एबे हमें आउट टॉपिक को जीवा जोठी हमें डिस्कस करवा फूड पॉइजनिंग आउ तार प्रिजर्वेशन ओके फूड पॉइजनिंग विषय जानिबा आउ तार प्रिजर्वेशन विषय जानिबा पिले माने फर्स्ट हम देखिबा फूड पॉइजन कोन ओके एडिट टिके समस्त नजर करियो एडिट टिके पेज एपट सेपट हे एठी फास्ट एटा रहइबा कथा सेकंड रे एटा आसीबा कथा किंतु एटा के नजर नाही तो एठी हमें समस्त एटा को टिके नोटिस करबा आ नोट बनेला बेले हमें ताको टिके ध्यान देबा सो लेट्स नो व्हाट इज फूड पॉइजनिंग फर्स्ट हम जानबा फूड पॉइजनिंग कोन when food contaminated with pathogen is consumed it causes food poisoning हमें जदि contaminated food को खाउचे जोतरे कि पैथोजेन्स अछंती ता द्वारा कोन हुए हम बॉडी में फूड पॉइजनिंग हुए द मोस्ट कॉमन सिम्पटम जदि यार सिम्पटम कथा कहबा जे हम पेट रे पेन हेता जंत्रणा पेन इन द स्टोमक and in severe cases जदि फूड पॉइजनिंग सीवियर हे जाउची फूड पॉइजनिंग कैन आल्सो कॉज डेथ फूड पॉइजनिंग पाई डेथ मध्ये हे जबार संभावना रहिछ so this is called food poisoning and this is the symptom of food poisoning then hame discuss kariba food preservation so hame jetobale januche contaminate food jodi contaminated हे जाउची food को जदि pathogens आसी जाउचंती so it is harmful for us so it is our duty to protect our food preserve our food यदि कंटामिनेटेड फूड खाइले फूड पॉइजनिंग होसी ताहले हा हमर दायित्व जे फूड को हमें केमती प्रिजर्वेशन करके रखबा ताहले कोन रही छी फूड प्रिजर्वेशन कोन प्रथमे जानिबा सो लेट्स स्टार्ट फूड प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ओके फूड प्रिजर्वेशन फूड को प्रिजर्व करके रखिबा
So certain chemical inhibits the growth of bacteria and increase the life of the cooked food. पिला माने किछिटा practices किछिटा प्रथा किछिटा process जदि आमे नौचे जोठी की growth of the bacteria, okay, inhibit means bacteria रो growth टा कमिबो and food रो life टा बढ़िबो किछिटा chemical प्रोसेस जदि हम फॉलो करिबा फूड नष्ट हबारु आमे फूड को बंचाई परिबा फूड कंटामिनेटेड हबारु आमे ताको बंचाई परिबा सो सर्टेन सिमिलर प्रिजर्वेशन मेथड्स कैन बी कैरिड आउट एट आवर होम जोटा को आमे आम घरे करिवार आवश्यकता अछि केमति फूड कंटामिनेटेड न होबो सेथि पय आमे विभिन्न प्रकार प्रोसेस आगु को पढिबा जोटा को आमे आम घरे मध्ये फॉलो करि परिबा फूड को प्रिजर्वेशन करिवा पाई फूड को पैथोजेन्स मानक ठारू सेव करिवा पाई ଆଉ ଆମ ନିଜକୁ ଫୁଡ୍ ପଏଜन ଠାରୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିନ୍ସ ସେଭିଂ ଫୁଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ପାଥୋଜେନ୍ସ ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ there is another term it have a term used which is food preservatives so what is the meaning of this preservative food preservatives are substance that prevent food जो substance गुड़ा को food को prevent करंती नष्ट हबारु ओके ओडिया रे जदि कहबा जो जिनिस जो पदार्थ फूड को नष्ट हबारु बंचाए ओके जोटा कि माइक्रोबायल ग्रोथ को बंचाए फूड प्रिजर्वेटिव्स ताकू आमे कहि थाउ increase the shelf life of a food preservative कौन करे food or life को मध्य increase करे it help to control the growth of a bacteria रो growth को control करिबारे help करे example of a food preservative जदि कहिबा सेमति किछि पदार्थ रो example जोटा कि food preservative भाबरे यूज होची sugar कहि देबा stable salt कहि देबा vegetable oil कहि देबा so these are example of a food preservative ये सब preservative एगुडा को सब हमें food को सेव करिवा पई यूज करू छै so these are food preservative clear समस्तिन करो देन हमें डिस्कस करिवा को सब प्रोसेस हमें फॉलो कले हमें फूड को प्रिजर्व करि परिबा ओके so फूड पॉइजनिंग एंड प्रिजर्वेशन हमें एबे देखिबा कौन सब प्रोसेस हमें फॉलो करिबा जहा द्वारा कि हमें फूड को प्रिजर्व करि परिबा सो देयर आर सम सच केमिकल मेथड्स सो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन फूड जदि हमें केमिकल मेथड कथा कहबा सेथिरे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड हुए फूड फॉर फूड प्रिजर्वेशन बाय मेजर फूड इंडस्ट्री मानक द्वारा केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को यूज हुए दे आर हार्मलेस टू ह्यूमंस जोटा कि ह्यूमन मानक पई से केमिकल गुडा को हार्मलेस ता द्वारा मनुष्य को किछि क्षति होय नथाय सोडियम मेटा बाइसल्फेट एंड सोडियम बेंजोएट आर कॉमनली यूज्ड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स सो मन रखिबा को केमिकल्स को हमें फूड प्रिजर्वेटिव्स रे यूज करू छे सोडियम मेटा बाइसल्फेट गोटे सोडियम बेंजोएट गोटे जोटा को हमें केमिकल प्रिजर्वेशन रे यूज करू छे फूड को केमिकली प्रिजर्व करिवा पई फूड को सेव करिवा पई केमिकली हमें यूज करूथिबा प्रिजर्वेटिव मध्यरु सोडियम मेटा बाइसल्फेट गोटे आ गोटे सोडियम बेंजोएट सो आको हमें मन रखिबा क्लियर दैट व्हाट इज केमिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन द केमिकल मेथड कोन हमें एबे समस्त क्लियर देन हमें देखिया यूज ऑफ अ कॉमन सॉल्ट साधारण लूणर व्यवहार रे मध्य हमें फूड को प्रिजर्व करि परिबा कॉमन सॉल्ट आल्सो नोन एज सोडियम क्लोराइड जोटा को हमें सोडियम क्लोराइड बोली कहउचे इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव एट होम हमें ताको होम रे केमिकल मेथड्स जोटा कि मोस्टली इंडस्ट्री रे हुए यदि घर कहिथा कहबा हमें कॉमन सॉल्ट यूज करि परिबा जोटा को सोडियम क्लोराइड कहउचे इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव एट होम जोटा को घरे प्रिजर्वेटिव भाव व्यवहार करा जाय vegetables are picked using salt as the salt removes water and kills the bacteria and fungus cells salt कौन करे ना जदि कहबा vegetables जो vegetables गुडा को रहिला picked using salt as the salt removes the water
and kills the bacteria. Salt water remove करे आउ बैक्टीरिया को किल करे and a fungus cells को मध्य नष्ट करे. So this is how we can use common salt in our home to preserve our food. Okay, so use of a common salt देखिले, use of a chemical देखिले. How it is preservation by sugar रो use करके मध्य हमें food को preserve करी परिबा. Sugar is used for preservation of a jam. Sugar को हमें jam रो preservation पाई, jellies रो preservation पाई, squash रो preservation पाई हमें sugar को use करू. The growth of microbes is restricted by the use of a sugar as it reduces the moisture content. So যদি ଆମେ ଜେଲିରେ ହେଇଗଲା, ଜାମ୍ସରେ ହେଇଗଲା, ସ୍କ୍ୱାଶରେ ହେଇଗଲା, ଆମେ ସୁଗାରକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେଟା ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଗ୍ରୋଥକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରେ, ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଗ୍ରୋଥକୁ ବନ୍ଦ କରେ. ବାଇ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସୁଗାରର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମାଇକ୍ରୋବ୍ସର ଗ୍ରୋଥ କମିଥାଏ as it reduce the moisture content. ତା ଦେହରେ ଥିବା moisture contentକୁ sugar reduce କରିଥାଏ. So this is how we can use sugar for preserving food. Okay, then आउ भी केतटा methods रही जहाँ को आमे use करके food को preserve करी परिबा. So preservation by oil and vinegar, तेल आउ vinegar रो use रे मध्य आमे food को preserve करी परिबा. Many food केमिति ना many food preparation like pickles are preserved by adding either oil. आमे समझ देखिथिबा घरे pickles हला बेले कौन हुए ना ऑयल रो यूज करा जाए. ओके, समस्त देखि छ ना देखिना पिकल्स रो जते बेले मेकिंग हुए सेते बेले यूज हुए ऑयल रो. ओके, सो आमे देखिथिबा घरे हमर आचार तयारी होचे जोटा त पिकल बोली कहउचे. पिकल रे तेल रो व्यवहार हुए. ओके, और विनेगार रो व्यवहार हुए कहीं ना ऑयल आउ विनेगार रे बैक्टीरिया ग्रो करि पारे नाही. दैट्स व्हाई in our home we use vinegar and oil in pickles to um, control increase of bacteria. Bacteria increase पाई हमें बैक्टीरिया रो डिक्रीज पाई, बैक्टीरिया increase को कमेबा पाई हमें विनेगर और ऑयल रो यूज करता हूं in pickle. So these are common examples that we are watching in our day to day life. हम दैनंदिन जीवन में हमें जो सब एग्जांपल्स देखुचे ताकू ही मु एठी डिस्क्राइब करूचे. नथिंग सीरियस, नथिंग very surprise things we are discussing. हमें जहाँ डिस्कस करूचे very common things, very conceptual things. So let's jump to the next topic, that is pasteurization. It is also a process of controlling pathogens from food. Pasteurization is a process of superheating and cooling beverages to kill pathogenic microbes. Okay, beverages means drink items. तुमरा मिल्क हे गला, तुमरा विभिन्न प्रकार ड्रिंक्स हे गला, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स. सो पास्चुराइजेशन गोटे प्रोसेस जोटा कि आमे प्रोसेस ऑफ सुपर हीटिंग एंड कूलिंग, सांग सांग गरम करके ताको ठंडा करबा. दिस इज द प्रोसेस ऑफ पास्चुराइजेशन. ताको हम पास्चुराइजेशन कहउचे, जोटा कि कोन करे ना माइक्रोब्स मान को किल करे. सडन जदि हमें किछ समय पई गरम करके ताको ठंडा कर दोचे ताहाले सेटा को हमें पास्चुराइजेशन कहबा, जा द्वारा कि बैक्टीरिया माने मरि थांती, माइक्रोब्स पैथोजेंस माने किल हे थांती. एंड इट एंश्योर्स द टेस्ट ऑफ द बेवरेज such as milk does not get destroyed. और तार टेस्ट मजे किछ नष्ट हुए नहीं. एग्जांपल हम मिल्क देखि परिबा. ओके, स्टोरेज एंड पैकिंग को जदि जिबा, dry fruits and many vegetables are preserved in tight air sealed containers. The absence of air prevents the growth of bacteria and fungi. So मतलब हम सील करछे, पैक करछे, सामान्य एनवायरनमेंट रो बा एयर रो माने कंटामिनेशन ला आसु नांती जोटा कि बैक्टीरिया इनक्रीज हेई पार.
So this is the storaging and packing. ओके बहुत सहज जिनस नथिंग माने वेरी सीरियस ओके एथे किछि बहुत बुझिला बलिया किछि नै बहुत इजी चैप्टर बहुत ही सुंदर चैप्टर बढ़िया चैप्टर सब पिला माने चैप्टर को भलो पांती ओके काहे ना बहुत इजी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हम बहुत जिनस जानि परले जोटा को हमें हम घरे व्यवहार करि परिबा निज को सेफ रखि परिबा ओके सो देन नाइट्रोजन फिक्सेशन हमें एबे नेक्स्ट टॉपिक को जम्प करबा जोटा कि हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बोली पढ़ी आसुचे जे हम मन भितर गोटे कांसेप्ट क्लियर हे पानु जे नाइट्रोजन फिक्सेशन कोन पिला ना गोटे सिंपल वे रे मु जदी कहबी हम एनवायरनमेंट रे जो नाइट्रोजन रही ओके सो से नाइट्रोजन को एनिमल्स हुंतु किंबा प्लांट्स हुंतु से माने डायरेक्टली कंज्यूम करि पारंती नाही ओके एनिमल्स और प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम करि पारंती नाही सो से नाइट्रेट को यूजेबल बा कंज्यूमेबल फॉर्म रे ब्रेक करिबा को हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बोली कहि थाउ कन्वर्टेड इट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स रे ब्रेक करे ओके जोटा कि यूजफुल फॉर द बायोकेमिकल प्रोसेस जोटा कि बायोकेमिकल प्रोसेस में यूजफुल होता है बा हमें ताकू प्लांट्स माने पेड़ पौधा माने और एनिमल्स माने ताकू रिसीव कर पाए सो डायरेक्टली हमें नाइट्रोजन को रिसीव कर पारू ना नाइट्रोजन समस्तिंकर रिक्वायरमेंट किंतु डायरेक्टली नाइट्रोजन को कहीं रिसीव करंतु नहीं नाइट्रोजन को तारा यूजेबल कंपाउंड रे नाइट्रोजन ब्रेक हुए बाय सम बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओके तापरे ताको हमें इनटेक कर सो इथे हमें गोटे नाइट्रोजन फिक्सेशन कोन हम मन भितर समस्त क्लियर थिला एबे हमें जीवा नाइट्रोजन साइकिल को जोटा को तुमको गोटे फिगर रे डिस्क्राइब करीबी नाइट्रोजन साइकिल सो इथे हम देखु छ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ओके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमें केमती ब्रेकिंग डाउन करूचे केमती प्रोसेस ता कंप्लीट होचे हम देखबा सो आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस हम एटमॉस्फेयर रे 78% नाइट्रोजन गैस रही छे नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल constituent of all living organisms जेतक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहउचंदी समस्त पय गोटे इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होची नाइट्रोजन गैस आज जेमती प्रोटीन क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड रो आवश्यकता विटामिन रो आवश्यकता रही समस्त को ठीक से बड़ी नाइट्रोजन रो मध्य समस्त को आवश्यकता रही समस्त बॉडी से प्लांट हो एनिमल हो ह्यूमन बीइंग हो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्ट सो पिला माने एटमॉस्फेयर रे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट अछि ताकू डायरेक्टली हमें टेक करि परिबा नाही डायरेक्टली ताकू नै परिबा नाही जेमति प्लांट हो कि एनिमल हो सो समान ताकू डायरेक्टली नै पारंती नाही इनटेक करि पारंती नाही सो certain bacteria and blue green algae किसी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae अछंती सॉइल रे जो माने कि कोन करंती नाइट्रोजन फिक्स करंती नाइट्रोजन फिक्स कोन हम जानले कन्वर्टिंग इट टू कंज्यूमेबल फॉर सो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर रो ब्रेक करके नाइट्रोजन कंपाउंड से ब्रेक करके ताकू प्लांट्स माने रिसीव करंती सेति पाई हेल्प करे किए ना सॉइल रे थिबा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल कंपाउंड्स गोटे थर नाइट्रोजन फिक्स हे गला बा नाइट्रोजन फिक्स मींस कन्वर्टिंग नाइट्रोजन टू यूजेबल कंपाउंड्स सो नाइट्रोजन वंस यूजेबल कंपाउंड्स को ब्रेक हे गला it can be utilized by plants ताको प्लांट माने यूज कर परिबे from the soil through their proteins and other through their root system समान तांको root system द्वारा समान नाइट्रोजन को soil रु consume करि परिबे then देखिबा नाइट्रोजन is then used
for the synthesis of a plant proteins and other compounds. पिलाମାନେ नाइट्रोजन को प्लांट प्रोटीन रो सिंथेसिस एवं अदर कंपाउंड्स रो सिंथेसिस रे यूज हुए. Animal feeding on plants gets when plant and animal get these proteins and other nitrogen compounds. जदि animal मान कथा कहबा धर गोटे एठी गोटे गछ अछि से गछ को किए खाइला गोटे छेली आसी खाउछि. सो पिला माने एठी रूट द्वारा नाइट्रोजन टा कोन हेतिबो ना ट्री को जाइथो. ट्री को जदि गोटे गछ को गोटे छेली खाइला छेली कोन हबो ना एनिमल टा सेठू तार नाइट्रोजन पाइला. सेमति गोटे जदि एप्पल गछ कथा एग्जांपल नबा गोटे गछ रे एप्पल हेछि आमे जाई कि ह्यूमन जाई कि कोन कला ना से गछ रु एप्पल खाइला. सो से ह्यूमन कोन कला ना तार नाइट्रोजन से पाइला काहे ना नाइट्रोजन टा पूरा बॉडी पार्ट रे प्लांट रो मिसुची और आमे ताको तारो एज ए रिजल्ट प्लांट है तारो फ्रूट हे गला आमे ताको फ्रूट को रिसीव करछे बा एनिमल्स माने तारो जो पत्र रहिला ताको रिसीव करछन लीव्स को रिसीव करछन. सो एई भई उपारे जे जहार नाइट्रोजन को कंज्यूम करि पाछ. व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई पुणी जेतेबेले प्लांट आउ एनिमल मरी जाउछंती बैक्टीरिया एंड फंजी प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल रे थिबा फंजी और फंगाई और बैक्टीरिया कोन करूछंती ना नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन. पुणी धर गोटे छेली रो एठी डेथ हला ता बॉडी को डिकम्पोज किए करछि ना सॉइल रे प्रेजेंट थिबा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेटा बॉडी डिकम्पोज हेई कि पुणी कोन होउछि ना नाइट्रोजन रे ता बॉडी जेता प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट से जेहेतु नाइट्रोजन ता बॉडी रे जो नाइट्रोजिनस वेस्ट थिबो ताकू नाइट्रोजिनस कंपाउंड रे ब्रेक करूछंती. पुणी से ब्रेक द नाइट्रोजिनस कंपाउंड को कोन होउछि ना पुणी प्लांट ताको रिसीव करूछि और तार ग्रोथ होउछि. ये गोटे साइकिल पिले आमे साइकिल को देखिबा. सो ऑलरेडी बुझी आस्किबो certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into atmosphere. As a result the percent of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. So सेथिपाई atmosphere रे नाइट्रोजन गैस कोन हुए कांस्टेंट रुहे बा अल्प कमी थाए. सो एमती नाइट्रोजन गैस टा मेंटेन होछि. ओके जेति की नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर रो आमे रिसीव करछे पुणी बुली की नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर को जाउछि. सर्टेन अदर बैक्टीरिया अछन किछि बैक्टीरिया अछन जो माने कोन करंती कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम नाइट्रोजनस गैस व्हिच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. से नाइट्रोजन कंपाउंड को किछि बैक्टीरिया अछन पुणी नाइट्रोजन गैस रे कन्वर्ट करंती. आमे जानते एटमॉस्फेयर रे नाइट्रोजन ता गैस आकार रे अछि ताकू नाइट्रोजन कंपाउंड रे ब्रेक करी कि बैक्टीरिया माने तापर जाई कि ताकू प्लांट रिसीव करछि. ठीक सेही बोली ए जो नाइट्रोजन कंपाउंड रहिले किछि बैक्टीरिया एमिति भी अछंती से कंपाउंड को जोड़ी के नाइट्रोजन गैस सृष्टि करूछंती जहा पुणी जाउछि एटमॉस्फेयर को आउ सेटा मेंटेन करूछि नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर रे. आर एग्जांपल एठी हम देखिबा एठी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एठी रहिछि जोटा कोन होछि ना एठी पिला माने लिग्युमिनस प्लांट विषय आम समस्त पढ़ीचे. ये हूँ लिग्युमिनस प्लांट आउ ये हूँ नॉन लिग्युमिनस प्लांट. आम देखा लिग्युमिनस प्लांट और नॉन लिग्युमिनस प्लांट रे लेग्यूम प्लांट आउ नॉन लेग्यूम प्लांट बा लिग्युमिनस प्लांट जहाँ कहूचे बा नॉन लिग्युमिनस प्लांट जहाँ कहूचे. सो लेग्यूम प्लांट कौन ना तुम जितक बीन जातीय गछ हो गला. ओके बीन हो गला तुम पी हो गला. ओके so these are leguminous plant आंकर कौन हुए ना आंक प्लांट रे एठी राइजोबियम बैक्टीरिया माने थांती जो माने सॉइल रे थिबा से माने कौन करंती ना सॉइल रे थिबा नाइट्रोजन को ब्रेकिंग डाउन करंती आउ नाइट्रोजन कंपाउंड रे परिणत करंती. ओके जहाँ को प्लांट इनटेक करे. सो
ठीक से बड़ी नॉन लिग्यूमिनस प्लांट रे कौन हुए ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आल्जी माने जो माने सॉइल रे थांती से माने नाइट्रोजन कंपाउंड को एटमॉस्फेयर रु नाइट्रोजन कंपाउंड्स को पिला माने कौन करंती नाइट्रोजन गैस को फास्ट कौन करंती ना नाइट्रोजन फिक्सिंग करंती नाइट्रोजन को NO2 माइनस NO3 प्लस NH4 एमती ब्रेकिंग डाउन करंती को माने ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जहाँ को ब्लू ग्रीन आल्जी बोली आमे कहूचे से माने नाइट्रोजन को ब्रेक कला परे नॉन लिग्यूमिनस प्लांट कौन करूची ना ताकू रिसीव करूची आ तार ग्रोथ होची ठीक से भली पुणी केमती ए साइकिल टा काम करूची ना जेतो बळे एटा प्लांट रो ग्रोथ होची सेतो बळे एनिमल माने से प्लांट को खाउचंती बा तार लीव्स को खाउचंती सो जेतो बळे से मान तार लीव्स को खाउचंती बा प्लांट्स को खाउचंती सेतो बळे से माने मध्य नाइट्रोजन गैस कंज्यूम करूचंती तापर जेतो बळे सेही एनिमल टा डेथ होची सेठी नाइट्रोजन कंपाउंड्स ता बॉडी रु माटी रे मिसुची से नाइट्रोजन कंपाउंड को डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट अछंती सॉइल रे जो माने कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस रे कन्वर्ट करिकि पुणी एटमॉस्फेयर को छाडुछन तो एई भेलिया गोटे साइकिल चलछि एटमॉस्फेयर रु सेटा आसुची नाइट्रोजन टा आसी कि नाइट्रोजन कंपाउंड रे फॉर्म होची से कंपाउंड रु पुणी कोन होची ना प्लांट को जाउची पुणी से प्लांट रु कोन होची ना ताकू एनिमल्स माने खाउचंती ताकू पुणी से एनिमल्स मानकर डिकम्पोजिंग जेतबल होची तादेरु पुणी से नाइट्रोजन कंपाउंड्स आसुची जोटा को डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया माने ताकू पुणी नाइट्रोजन गैस रे कन्वर्ट करके एनवायरनमेंट को छाडुचंती सो एई भलिया गोटा साइकिल एठी काम करूची so this is nitrogen cycle this is how nitrogen cycle works okay this is how nitrogen maintains in environment so एठी चैप्टर ता सरुची दीटा क्लास रे हमर चैप्टर सरिला आशा करूची दीटा क्लास तुम को भलो लागिवो सो जो माने क्लास को देखुचंती ता प्रीवियस रु फर्स्ट क्लास को देखि नियंतु सो आम संगे जोड़ी होकर रही आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ बाकी वीडियो केमिति लगी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन रे जणांतु बाकी व्हाट्सएप नंबर को समस्त आम यूज करि परिबा फॉर डाउट्स पई आम व्हाट्सएप नंबर को व्यवहार करि परिबा बाकी तुम माने उत्कल क्लास रो मोबाइल एप्लिकेशन प्ले स्टोर रो डाउनलोड करि परिबा आर्ट फ्री एजुकेशन पई आर्ट फ्री स्टडी पई सो आज रो क्लास रे एतिके आशा करुच्ची समस्ते वीडियो को भल पाइबा देबे एवं निज सांग मानक संगे शेयर करिवे सो रहुची पुणी देखाबा गोटे सुंदर वीडियो लेक्चर रे जय जगन्नाथ।